कॉस्ट डालना पड़ेगा, आपको बिलिंग का अमाउंट डालना पड़ेगा, तभी तो अक्रूवल रन होगा। अगर वो ब्लैंक होगा तो ऑब्वियसली अक्रूवल भी रन नहीं होगा। तो कंडीशन ये है कि वहां पर अमाउंट शुड बी एंटर्ड इन द जॉब। ओके, अब मैं जाता हूँ, फाइंड करता हूँ मतलब पेंडिंग कॉस्ट। ओके, तो पेंडिंग कॉस्ट वाउचर्स, तो ये रिपोर्ट मैं लेता हूँ पेंडिंग कॉस्ट वाउचर्स की। एंड सिंस यू स्टार्टेड इन सितंबर, 1 सितंबर, तो मैं चेक करता हूँ कि 1 सितंबर में आपका क्या पोजीशन था। ओके, 30th सितंबर में क्या पोजीशन था। ओके, तो एज ऑन 30th सितंबर कितने कॉस्ट ऐसे थे जो कि बुक नहीं हुए थे। उसके बाद हो सकता है कॉस्ट आए होंगे, ठीक है, बट एज ऑफ 30th सितंबर ये आपकी पोजीशन थी कि ये कॉस्ट आपने एंटर किया था ये जॉब्स में, और उसको फाइनेंशियली बुक नहीं किया था। ठीक है, 35 एंट्रीज से। तो ये कौन सी रिपोर्ट है? पेंडिंग जॉब कॉस्ट वाउचर एज ऑन 31st। फिर दोबारा मैं जाता हूँ अक्रूवल पे। जॉब कॉस्ट अक्रूवल। ओके, जॉब कॉस्ट अक्रूवल पे जाता हूँ मैं। कस्टम डेट रेंज फ्रॉम 1 सितंबर to 30th सितंबर। क्रिएटिव करना है। So if I mean see this any vouchers, there is no vouchers for the accrual as run because I'm running the first voucher. Okay, so I click on add new. Shall I repeat this step again? So first was the pending cost voucher. This is just for my reference purpose के as of 30th September. As on 30th of September, what was my cost जो कि बुक नहीं हुए थे। ओके, ये समझ में आ गया। तो फिर मैं जाता हूँ अक्रूवल में। अब मुझे अक्रूवल रन करना है, ठीक है ना, इस कॉस्ट का अक्रूवल रन करना है। तो जब मैं जॉब कॉस्ट अक्रूवल में जाऊंगा, ऑब्वियसली द फर्स्ट थिंग इट विल शो इज द लिस्ट कि जो वाउचर्स जो जर्नल एंट्रीज पास किए थे वो तो ऑब्वियसली दिखाएंगे नहीं यहाँ पर, क्योंकि फर्स्ट मैं अभी पास कर रहा हूँ। तो दिस इज द लिस्ट। नाउ आई गो ऑन एड न्यू एंड देन आई सिलेक्ट कस्टम रेंज, क्योंकि मुझे सितंबर का पास करना है, तो फ्रॉम 1 सितंबर to 30th सितंबर। So it is showing with those same entries here के ये डेट से लेके ये डेट तक जो जॉब्स क्रिएट थे सितंबर to 30th सितंबर, किस किस का मुझे अक्रूवल रन करना है। ठीक है ना, जिसका अक्रूवल ऑब्वियसली अगर इसका कॉस्ट एंट्री हुआ होता तो ये फिगर्स यहाँ पर नहीं दिखाते। अगर कॉस्ट मैंने डाल दिया तो ऑब्वियसली ये फिगर यहाँ पर नहीं दिखाते। ठीक ना, अब क्योंकि उसका एंट्री नहीं हुआ है, ये फिगर्स यहाँ पर दिखा रहे हैं। ठीक है ना, द मोमेंट आई रन एन अक्रूवल और द मोमेंट आई बुक अ परचेज, ऑब्वियसली इट विल नॉट शो हियर। ठीक है ना, तो एग्जांपल के पर्पस के लिए मैं एक जॉब लेता हूँ एट द मोमेंट। ओके, you can, once you are comfortable with that, you can select 10 jobs and you can run a batch process. Okay, till the time you are not comfortable with the flow, आप एक जॉब लें, उसका अक्रूवल रन करें और उसका इफेक्ट देखें कि उसका क्या इफेक्ट आता है। ठीक है ना, तो आई टेक दिस वन जॉब, जनरल जॉब, जिसका 46.33 करके है। इन द मीन टाइम व्हाट आई विल टेक इज
प्रॉफिट लॉस भी साथ में ले लेता हूँ। ये दो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट खोली है। ओके, so we'll see the effect of that entry once I process this. Okay, amount is 46.33. अल्ताफ रिकॉर्डिंग कर रहा है क्या इसका? अल्ताफ, ओके, नहीं रिकॉर्ड नहीं कर रहा, बाद में वो कर लूंगा। so when I click on the create accrual journal, it is asking me to type the date range, or type the date of the, basically this is a journal voucher, तो इस journal voucher का date क्या होना चाहिए? Ideally, if I am passing accrual for September month, it is always at the end of the month. Okay, end of the month. I will select here September 30th. Okay, even if I make a mistake here and I select here October, system will give a validation message that, let's see, let's for the example, for the case, I will select like 30th of October. Okay, so shipment job and accrual transaction date are not in the same month. Are you sure you want to continue? You say no. Yeah, so it will allow. It is up to you, man. It is not a hard validation. It will just give a message. Okay, so now you select it as 30th of September, right? Remember this amount, 46.33. So basically this journal entry will open. Okay, as you see here, job cost accrual journal. Okay, everything is filled up here. Warehouse handling charge. Approved job cost. ये अक्टूबर का है, अक्टूबर का है। ऊपर आपने लास्ट 30 डेज लिया है, सितंबर का लेना है। ये क्यों दिखा रहा है? Warehouse handling charges, accrued job cost.
वो चार्जेस का अच्छा, नाम है। हाँ हाँ, ठीक हाँ, है, ओके, ये चार्ज लाइन आइटम है और ये वो पर्टिकुलर ग्रुप अकाउंट का है, नाम। ठीक है, हाँ अप्रूव्ड हाँ। जॉब कॉस्ट। Just make a note on this of this cost. Accrued job cost, now it is showing 0. I'm opening this second and I click this. Job. Here I smell the हाँ, एक सेकंड, मैं मुंतकिम से बात करता हूँ। अल्ताफ, इसमें एंट्री तो गया है। अलग ग्रुप से, मगर अलग ग्रुप ना राहु जे मैं एक सेकेंड एंट्री भी प्रोसेस कर देता हूँ। एक्चुअली इट शुड शो हियर इन द P&L under the accrued job cost. Okay, so that he will check. Second entry, again I took the September from 1st September to 30th of September, and then I select the date 30th of September, and now I will select 2 jobs. Okay, now how does this entry go is this you have defined the actual vendor. Okay, these are the actual vendors defined in the job. All right, these are the actual, this is the name of the actual vendor which you have defined in the job, okay, for this particular cost. But system will not credit this vendor. It is just displaying for reference purpose. Because without, you have not received the invoice and you are passing this accrual. So obviously you are waiting for the invoice to come from these vendors. So system will not credit this vendor. There is a cost accrual payable. This we have created one account. It is in vendor. It is a dummy vendor, cost accrual payable, accrual vendor to be credited. Okay. Now, since I have selected 2 vouchers here, create single accrual journal will be disabled. It will show here, this will be enabled batch process for this, because this will be batch process. So you can select more than one. If you select one, then this will become disabled and this will become enabled. If I select more than one, then this will become disabled and this will become enabled. So again, I will select this. In batch processing, it will not show you the preview of the voucher.
directly it will batch process. Because if you have selected 10 jobs, it cannot show you journal entry one by one. Okay, so it will just batch process. So that is the difference between single accrual entry and batch process. Okay, so altogether we have passed like 3 entries. But it should show the effect here. Okay. Altaf will check with Ali, and he will get back to you. And again, he will connect and he will show you this if an issue has happened during the transaction. Okay. अब इसका अगर effect देखना क्या है तो you can go to that particular job. Now suppose all these accrual transactions which you have done. Okay. If you want to see how many of these accrual transactions you have done, because all these accrual transactions have to be reversed when you are actually getting the purchase invoice. Whenever you get a purchase invoice in October, first this accrual transaction will have to be reversed, and then the purchase entry will have to be booked. Okay, so there is a report here, accrual versus, so accrual versus job cost journal, accrual journal versus reversal journal. Okay. This is a particular report, just like pending cost report, this is also a report. Okay. So cost accrual journal versus reversal journal. And I want to see cost accrued but not reversed. Okay. Then there is an option cost accrued and purchase saved. Maybe you saved a purchase before passing a reversal by mistake. So you can see that this option, and it will show you that these are the purchases, these are the cost accrued and purchase you have done, but you have not reversed. Ideally, you should reverse it first and then do the purchase. Okay. Then here the cost accrued and reversed, but purchase not saved. ऐसा भी हो सकता है कि you do the reversal but you forget to enter the purchase entry. एक गलती से reversal भी चला दिया लेकिन अभी तक purchase नहीं डाला है. तो ये तीनों चीज you can have a look at it. Okay, so at the moment we have done the accrual but we have not done the reversal. So these are the 3 journal entries which have been accrued but still not. अब इसका देखेंगे परचेज एंट्री भी डल गया है, यहाँ पर परचेज एंट्री दिखा रहा है. ये 2 जॉब्स की you have already done the purchase entry but reversal entry नहीं हुई है. इसकी परचेज एंट्री नहीं डाली है, 2312 की परचेज एंट्री नहीं डाली. तो जो एक्चुअल परचेज एंट्री डालोगे ऑब्वियसली जो डिफाइंड वेंडर है उसके नाम पे डालोगे. But when this purchase entry was done, it was done in October. So all you need to do is reverse these 2 entries. Okay. Now, before doing that, what we will do is we will go to that particular job 5446 and just have a look at it. But what had happened? So job ledger. Okay, what is 5446? So 5446 में क्या हुआ था? Accrued job cost on the 30th. Okay. फिर credit purchase that was in October. Then you had one job credit purchase which was in September. 2nd September को ये job खुला था. Okay. So ideally all your cost and all your revenue should be booked in September. But
some went, this one went in September, this one went in October, some went in September, job invoice was in September. तो ऐसे मतलब पूरा अगड़म बगड़म हुआ है. But ideally we have to bring everything into September, into that month. Okay. तो इसके लिए फिर क्या किया हमने, एक तो अक्रूवल पास कर दिया है यहाँ पर 46.33. ठीक है. इनवॉइस रेवेन्यू बुक करने की जरूरत नहीं क्योंकि रेवेन्यू ऑलरेडी सितंबर में चला गया है. तो ये एक ही जो कॉस्ट है जो कि हमको सितंबर में खींच के लेके आ रही है, दैट वी हैव डन टू एन अक्रूवल एंट्री. ओके. बट देन ये डबल कॉस्टिंग हो गई यहाँ पर. अक्टूबर में फिर उसका परचेज एंट्री आ गई है 46.33 which we need to reverse, right? So for that purpose, I'll just close this job. What we need to do here is job cost reversal journal. पहले अक्रूवल चलाया था, अभी हमको रिवर्सल चलाना है. ओके. तो इन नॉर्मल केसेस जब भी यू गेट अ परचेज एंट्री, whenever you get a vendor purchase invoice, you have to first pass a reversal and then do the purchase. So when you do the purchase, when you do the reversal, automatically it will be available for the purchase and you can pass the purchase. So you don't have to go to the job to go on changing or adding the cost or doing, just one time you have to add the cost in the job. And this process will be taken care of by the system. Okay. यहाँ पर गया रिवर्सल में, इट इज द सेम प्रोसेस. यहाँ पर लिस्ट में कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि ऑब्वियसली रिवर्सल तो डाला नहीं है हमने. Add new job creation date. So this also works on the job creation date. So I go to that custom range पे जाने की जरूरत ही नहीं, ऑलरेडी यहाँ पर ये दिख रहा है लास्ट 30 days का. Because that it is coming under this last 30 days. So already जिसका मैंने अक्रूवल डाला हुआ है वो यहीं पे दिख रहा है. ओके. लेकिन मेरे को अगर बैच प्रोसेस करना है तो ऑब्वियसली मैं फिर पूरा सितंबर का बैच प्रोसेस करूंगा. हाँ, रेंज देके मैं बैच प्रोसेस उसको सिर्फ वही स्पेसिफिक मंथ का मैं प्रोसेस करूंगा. अक्टूबर की भी कुछ एंट्रीज यहाँ पर दिखाएंगी लेकिन मेरे को अक्टूबर का नहीं करना है. सो बाय डिफॉल्ट इट विल शो ऑल विच हैव बीन अक्रूड बट नॉट रिवर्स्ड. But if I want to select only September month ka reversal, then I can select the particular voucher here for the September month. ये दोनों की परचेज एंट्री पड़ चुकी थी. ठीक है. अक्रूवल एंट्री पड़ी थी और परचेज एंट्री भी पड़ी है. So I am selecting, I want to put a multiple entry as per the purchase entry. I want to put a reversal entry as per the purchase entry. यानी पहले सिस्टम को मैं ये बता रहा हूँ कि ये 24 अक्टूबर 10th of October में परचेज एंट्री ऑलरेडी पड़ चुकी है. ओके. जस्ट रिवर्स माय अक्रूवल बेस्ड ऑन द परचेज एंट्री. आइडियली अगर मैं 24th को परचेज डाल रहा हूँ तो पहले 24th को मैं रिवर्सल करूंगा फिर परचेज एंट्री डाल दूंगा. सही है ना. बट परचेज एंट्री ऑलरेडी मैंने डाल दी है. I did not put my accrual entry. So I selected the date range and here I selected
I want to put the accrual of those jobs which is having a purchase entry. Okay, select to batch process reversal journals against multiple purchases having different transaction date. It is having different transaction date and having a purchase entry. अगर सिंगल एंट्री डालनी है देन आई हैव टू डिफाइन द रिवर्सल ट्रांजैक्शन डेट कि किस डेट पे मेरे को रिवर्सल करना है. सपोज सिर्फ इसी का ही मेरे को करना होता तो मैं यहाँ पर 24th रिवर्सल डेट 24 डालता, इस एक को सिलेक्ट करता और सिंगल रिवर्सल जर्नल डाल देता. ओके, सिंस आई एम प्रोसेसिंग मल्टीपल जर्नल्स, आई विल select batch process reversal journal against multiple purchases having different transaction date. It will respect the purchases date. Okay, मैं click here. So एक एंट्री थी which was without the purchase और दो एंट्री थी with purchase. बराबर ना. एक जॉब था without purchase, so when it was like this, it was showing me that entry which was not having a purchase. ये विदाउट परचेज एंट्री थी, इसकी अभी तक परचेज आई नहीं. तो जब भी इसकी परचेज आएगी पहले इसको मैं सिलेक्ट करके रिवर्सल डालूंगा एंड देन यू विल बी पुटिंग द परचेज एंट्री. देन सेकेंड ऑप्शन आई सिलेक्टेड विद परचेज एंट्री. तो विद परचेज एंट्री में मेरे को दो जॉब्स दिखाए कि ये दो जॉब्स के परचेज एंट्री पड़ गई है लेकिन रिवर्सल नहीं पड़ा. तो उसका मैंने सिलेक्ट करके बैच प्रोसेस कर दिया तो वो यहाँ से निकल गया. अब एक क्या एंट्री पड़ी हुई है, एक एंट्री पड़ी हुई है जिसका मैंने अक्रूवल चला लिया है सितंबर में, बट आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द परचेज वाउचर टू कम टू मी. इवन इफ यू मेक अ मिस्टेक, भूल जाओगे कि भाई परचेज पहले कर दिया, उसका रिवर्सल मैंने नहीं किया, तो बाद में भी रिवर्सल कर सकते. अभी अक्टूबर में एंट्रीज डाल दी, परचेज की एंट्री डाल दी, आई कैन गो बैक इनटू सितंबर एंड आई कैन पास माय अक्रूवल, आई कैन पास माय रिवर्सल. परचेज एंट्री ऑलरेडी हो गई. तो ट्राई टू मेक अ प्रोसेस कि परचेज एंट्री कोई भी आती है. एक तो प्रोसेस है कि सितंबर के एंड में जितने भी कॉस्ट वगैरह डाले हैं, एज आई सेड बिफोर, द ओपनिंग स्टेटमेंट वाज जैसे जॉब बनाओ उसमें कॉस्ट डाल दो, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट डाल दो, कोई बात नहीं, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट डाल दो और अप्रोक्सीमेट रेवेन्यू डाल दो. फिर एट द एंड ऑफ द मंथ यू जस्ट रिव्यू कि इसमें जो डाला है वो सही डाला है. 99% अगर सही डाला है तो योर प्रॉफिट एंड लॉस फॉर दैट पर्टिकुलर मंथ वो 99% एक्यूरेट होगा. देयर इज ऑलवेज 10% का हम उसको चांस ले लेते कि इधर उधर होगा. 10% ऊपर हो सकता है, 10% नीचे हो सकता है व्हेन द एक्चुअल परचेज वाउचर कम्स एंड व्हेन द एक्चुअल इनवॉइस इज रेज्ड. बट एटलीस्ट 90% जो प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर्टिकुलर मंथ की, दैट विल बी बुक्ड इन दैट पर्टिकुलर मंथ. ठीक है, तो दैट इज द आइडिया बिहाइंड दिस. अगर आप नहीं भी करेंगे then also it doesn't matter, but then obviously because it's a work in process kind of a business कि आगे चल के जनवरी का कुछ प्रॉफिट फरवरी में जाएगा, फरवरी का प्रॉफिट कुछ मार्च में जाएगा, तो ऐसे चलता रहेगा. क्योंकि हो सकता है कुछ जनवरी की कॉस्ट फरवरी में बुक की, कुछ फरवरी जॉब की कॉस्ट मार्च में बुक की. तो इफ यू सी वन क्वार्टरली प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो इट्स एन एवरेज स्प्रेड ओवर 3 months. लेकिन अगर एग्जैक्टली इफ यू वांट टू नो कि नहीं एग्जैक्ट जनवरी में कितना प्रॉफिट हुआ, वो उसमें भी एग्जैक्ट नहीं आएगा. 10% उसमें ऊपर नीचे होगा व्हेन यू गेट द एक्चुअल इनवॉइस, व्हेन यू रेज द एक्चुअल बुक द एक्चुअल परचेज. तो 10% का मार्जिन तो उसमें भी है अभी ये जो अक्रूवल रिवर्सल कर रहे हैं. Then again it depends on what cost and what revenue you are entering in the job. If it is 95% correct तो 95% प्रॉफिट एंड लॉस सही आएगा. 5% का
उसमें प्लस माइनस होगा। क्लियर? तो ये जो अभी दो रिवर्सल की एंट्री की थी, ठीक है, उसका हम इफेक्ट देते हैं। जॉब नंबर है 5446. So this same 5446, if we see the तो इसमें पहले अक्रूवल आए 46.33 का, ओके, फिर आया परचेज 2410 का, ठीक है, लेकिन फिर ये जो डेबिट हुआ था उसको रिवर्स कर दिया सिस्टम ने 46.33 और इमीडिएटली उसका एक परचेज आपने जो डाला था, ठीक है ना। बाकी जो इसका रेवेन्यू सितंबर में ही बुक हुआ है, एक परचेज सितंबर में बुक हुआ है, इनवॉइस सितंबर में बुक हुई है, तो ये जो प्रॉफिट है ये अभी सितंबर में दिखाएगा। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है, दो प्रॉफिट एंड लॉस जो है, अल्ताफ मुंतकिर से बात की है? अल्ताफ? हाँ वो चेक कर रहा है। ठीक है, ये दो प्रॉफिट एंड लॉस इधर हाँ। मैंने ओपन करके रखा हुआ है, ठीक है ना। इसमें से एक क्लोज करके सबमिट करना, ठीक है, तो यहाँ पर एंट्री दिखेगा। ओके अल्ताफ? हाँ मैं दिखाऊंगा ये डिफरेंस। हाँ, तो ये दोनों प्रॉफिट एंड लॉस, ये बिफोर पासिंग एन एंट्री, ये आफ्टर पासिंग एन एंट्री, तो ये दो प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर ओपन करके रखा हुआ है। हाँ, उनके एक अक्रूवल करके और भी दिखाऊंगा, तो हाँ, उनको रिफ्रेश कराऊंगा। कंपैरिजन के लिए दो दिखाया, फिर क्या करना, उनको बोलना करने के लिए। हाँ। अगर रिकॉर्डिंग करके रखा है, लेट देम सी दैट रिकॉर्डिंग 4-5 times, and then in the afternoon when you want to run the accrual, Altaf will connect and he will show you. Try to get it first, get the concept and get the idea behind that. It is pretty simple. Initially आपको थोड़ा hesitation होगा कि गलती तो नहीं कर रही हूँ, but system will, हम चाहते हैं कि आप गलती करें so that we can block that loophole, you know. And unknown user should also be able to do this smoothly and quickly. So just see the video, whatever I have shown you, see the video and try to get a concept. आप खुद एक करने की कोशिश करो या दो चार एंट्रीज अक्रूवल और रिवर्सल अल्ताफ को बोले कनेक्ट करो, देखो मैं करती हूँ एंड वेदर आई एम डूइंग इट करेक्टली और नॉट, ठीक है, या दो एंट्री आप खुद डालने की कोशिश करें। इफ यू आर एबल टू सक्सीड देन ऑब्वियसली यू कैन गो अहेड विद 2 more entries and 2 more entries। चार्जर वाला भी लग जाएगा इसमें, क्या डालना, ठीक है। The only thing now is, any questions regarding this? हाँ, so we have tried to do it like system generated. इसमें यूजर का कोई इंटरवेंशन नहीं है। बाद में परचेज डालें, पहले अक्रूवल करें, बाद में अक्रूवल करें, there is no restriction. The idea is to bring all the profit and loss into the September month if you are having all these September jobs. But then once you start following this pattern, you have to continue with it. You cannot be like first 3 months आपने किया, फिर 3 महीने नहीं किया, फिर 3 महीने किया, so that will not bring a proper reporting in your profit and loss. But if you master this process, it will become mechanical. Just like how you are doing a data entry, this accrual and reversal will also become mechanical. And this is one of the best practices in accounting. इससे क्या आपका FTA के रिक्वायरमेंट्स भी फुलफिल हो जाएंगे, आपके ऑडिट के रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो जाएंगे, आपके इंटरनल रिपोर्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस के रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो जाएंगे। ओके, still you think no questions? हाँ, तो एक तो पेंडिंग कॉस्ट है, पेंडिंग कॉस्ट में सारे पेंडिंग कॉस्ट बता देंगे एज ऑन 30th of September. Okay, this is just for your reference purpose, the pending cost as of 30th of September. Then you start with the accrual. Okay,
So when you pass the accrual, again it is connected to the same report. Accrual is connected to the same report. Okay. It will show you the same figures as on September जो कॉस्ट नहीं आया था. Then you select okay मेरा इसका मेरे को accrual पास करना है as of 30th of September. Accrual पास कर दिया. You can go to this particular report के accrual journal versus reversal. Okay, cost accrued but not reversed. So it will show you all the cost which you have accrued, which you have booked, but you have not reversed. Okay. Also it will show you जिसका purchase बन गया. Then you go to the actual reversal. Okay. So cost versus reversal. So when you go there, you click on add new and it will show you all the entries without purchase entry and with purchase entry. So obviously if there is no purchase entry, obviously you will not run the reversal, you will wait for the vendor invoices to come. But this will just give you an idea कि ये vendor की invoices अभी तक आई नहीं है और ये same report यहाँ पर भी दिखेंगी. Pending expenses, pending cost vouchers. What was your question? You have to first pass the reversal, then book the purchase. That is the normal practice. नहीं, जॉब में जाके उसको बुक नहीं करोगे. जॉब में जाके परचेज कैसे बुक कर सकते? इधर जाओगे ना, पेंडिंग रिवर्सल. नहीं, पेंडिंग रिवर्सल में जाएंगे पहले पेंडिंग रिवर्सल में जाएंगे, उसका रिवर्सल पास करेंगे. तो फर्स्ट यू विल पास. सितंबर के एंड में तो अक्रूवल तो ऑलरेडी चल चुका होगा, बैच प्रोसेस कर लिया है अक्रूवल. ठीक है ना. तो सितंबर एंड में एक प्रोसेस कंप्लीट कर दिया अक्रूवल का. अब 2 प्रोसेस बचा है, रिवर्सल एंड परचेस. तो whenever you get an invoice, उसका पहले रिवर्सल पास करो. पेंडिंग रिवर्सल में जाएंगे तो वो एंट्री दिखेगा ना यहाँ पे. अभी मान लीजिए कि ये इनवॉइस आपके पास नहीं आया था फ्रेट सिस्टम का. तो अभी जब फ्रेट सिस्टम का इनवॉइस आएगा तो व्हाट यू विल डू, यू विल गो टू पेंडिंग कॉस्ट रिवर्सल, पेंडिंग जॉब कॉस्ट रिवर्सल. You will go to job cost reversal journal and you will select add new. तो यहाँ पर उसका दिखाएगा. जैसे when you go to the credit purchase में दिखाता है ना. Suppose if you get a freight system invoice, okay, forget about the accrual and all this. What you will do, where you will go, you will go to job credit purchase. That would be your natural reaction. All right, you will go to job credit purchase and then you will select here add new and you will say freight system. Right, freight system. तो freight system में वो particular job दिखाएगा. Which one? 5442. 5442. हाँ, क्योंकि अभी उसका अप्रूवल चल गया तो यहाँ पर नहीं दिखाएगा. अप्रूवल चल गया तो नहीं दिखाएगा यहाँ पर.
तो वो तुम्हारे को एंट्री करने ही नहीं देगा। जैसे उसका रिवर्सल पास करोगे तब वो यहाँ पर दिखेगा। तो whenever you get a purchase invoice, you will not go to job credit purchase. First thing you will do is you will go to the reversal. तो एक नॉर्मल आफ्टर डूइंग सम एंट्रीज ये नॉर्मल प्रैक्टिस बन जाएगा कि पहले मैं रिवर्सल में जाऊं और वहां पर जाके उसको रिवर्स करूं। तो इसका इसका जो है आप परचेज कैसे बना सके, क्योंकि आपने अक्रूवल नहीं चलाया, दैट्स व्हाई यू पुट द डायरेक्ट परचेज। सिस्टम ने अलाउ किया परचेज, वो 2 जॉब जिसका परचेज बना था ना, हाउ यू वर एबल टू पुट द परचेज, व्हाई सिस्टम डिड नॉट प्रिवेंट यू, बिकॉज यू डिड नॉट रन द अक्रूवल। Had you run the accrual, ये केस सामने है, had you run the accrual, obviously it will not show you in the purchase option. And then you'll start wondering why it is not showing in the purchase. Maybe the cost is not entered. Then you will go to that particular job, cost is also entered. Then you will realize, oh, I have to first pass a reversal. तो सितंबर का आप खत्म कर लें जो भी एंट्रीज करनी है। सो ऑब्वियसली फ्रॉम अक्टूबर ऑनवर्ड्स इट विल बिकम अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। अक्टूबर एंड में सारा अक्रूवल चला लिया, देन जैसे जैसे जिसका इनवॉइस आते गया, पहले रिवर्सल किया, फिर परचेज किया, रिवर्सल किया, परचेज किया। हाँ, दोनों का रिवर्सल कर दिया ना। विच प्रोसेस? अक्रूवल। Why will you pass the reversal without the purchase invoice? Why would you pass the reversal without the purchase invoice? Ideally, you will not be able to make the purchase entry, तो ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस हो जाएगा ना, पहले जाके मैं रिवर्सल करूं और फिर परचेज करूं। Ideally, the reversal entry should be done once you get the invoice. Once you get the invoice, reverse and put a purchase entry. मान लीजिए कि समझो आपने रिवर्सल डाल दिया, अक्टूबर में रिवर्सल डाल दिया, ठीक है ना, और वो इनवॉइस अक्टूबर में नहीं आया, तो कौन सा प्रोसेस रन करोगे? सिस्टम आपको कैसे अक्रूवल फिर से रन करने देगा? ऑन व्हाट बेसिस? आपने अक्रूवल डाला, आपने रिवर्सल डाला, प्रोसेस खत्म, फिर कैसे आप अक्रूवल डालोगे? ऑब्वियसली फिर क्या होगा, आपका जैन में भी कॉस्ट आ जाएगा और आपका फेब में भी कॉस्ट आ जाएगा। आप समझे? क्योंकि जैन में आपकी डेबिट एंट्री आ जाएगी और फेब में आपकी क्रेडिट एंट्री आ जाएगी, तो वहां पर आपको एक्सपेंस दिखेगा और यहाँ पर आपको प्रॉफिट दिखेगा। ये सिचुएशन से बचने के लिए ही तो अक्रूवल और रिवर्सल डाल रहे हैं, क्योंकि एक मंथ में कॉस्ट आता है, दूसरे मंथ में इनवॉइस आता है, तो फिर ब्लाइंडली अगर रिवर्सल कर दिया तो उसका कोई मतलब ही नहीं है ना। रिवर्सल इसलिए करते हैं कि जब इनवॉइस आएगा उसको क्रेडिट किया और इमीडिएटली फिर डेबिट कर दिया, तो वो क्रेडिट डेबिट जो है उस मंथ में वो नलीफाई कर देता अपने आप को। और कॉस्ट कब बुक होती है एक्चुअल? जनवरी में, अक्रूवल के जरिए। ठीक है, एनी डाउट? हाँ, डाउट तो नहीं है, थोड़ा एप्रीहेंशन है, दैट विल बी स्मूदन आउट। सो व्हेनेवर यू आर गेटिंग इनटू अ न्यू सिस्टम, ऑब्वियसली थोड़ा बहुत एप्रीहेंशन रहता है। So I would suggest go through the video, try to put 2 entries yourself. First, obviously, this he will fix and he will show it to you. Okay. So once you see that figure here,
देन यू विल रियलाइज कि हाँ ये दिस इज ओके, और उसका भी रिवर्सल भी डाल दिया, तो एज ऑन 30th सितंबर देखें और फिर एज ऑन टुडे अक्टूबर, क्योंकि उसका फिर रिवर्सल भी डल गया और परचेज भी डल गया। दो जॉब्स का रिवर्सल भी डाला है, 3 जॉब्स का अक्रूवल डाला है, और 2 जॉब का रिवर्सल डाला है और परचेज डाला है। परचेज तो यू हैव ऑलरेडी पुट द परचेज, ठीक है ना। तो उसका इफेक्ट पीएनएल में क्या आता है वो देख लेना, ठीक है ना। वो अल्ताफ दिखा देगा, मोन्टेकिम से कनेक्ट करके दिखा देगा, ठीक है। Now I will disconnect. Hemendra ji, you can connect directly to their uh, to any desk, okay? या फिर अल्ताफ से कनेक्ट कर लेना, अल्ताफ will get you connected, or you can connect directly there.